Hello kids, how are you all? So in the last video we had studied the basic operations which we can do on the desktop, that is selecting and deselecting the icons. Then we have also studied about selecting adjacent and non-adjacent icons. Means आपने adjacent और non-adjacent icons को भी पढ़ा था, like how with the help of shift key, कैसे आप shift key के help से आप adjacent items को एक साथ select कर सकते हो. Then with the help of control key we can select the non-adjacent items. Now today we are going to start with the next topic, that is arranging the desktop. Now on your desktop here you can see all the icons were messed up. आप देखो यहाँ पे सारे icons फैले हुए हैं, means they are spread on the desktop, पूरे desktop पे फैले हुए हैं. Here also you can see recycle bin is there. Then this PC, then network, cyberlink, so many icons are there and they all are spread all over the desktop. ये पूरे desktop पे फैले हुए हैं. Now it will be difficult for us, suppose if we want to do the right clicking on the desktop, blank area पे आप desktop पे right click करते हो, then by mistake we can press this icon only. और by mistake हम क्या कर सकते हैं, इस icon पे ही click कर देंगे अगर ये properly setup नहीं होगा. So the main purpose of arranging the icons is to make the desktop neat and tidy. Means आप जब भी देखोगे आप let me give you example of your study table only. आपने देखा होगा जब आपके study table पे आपकी books पूरी फैली होती हैं, it looks like a mess up. वो पूरा mess up दिखता है. आप suppose if you are finding any subject book, अगर आप कोई subject की book ढूंढ रहे हो, you won't be able to find it easily. आप उसको easily ढूंढ नहीं पाते हो. But when you arrange it in proper order, जब आप उसको proper order में करते हो, you can easily फाइंड आउट एनी ऑफ योर बुक. आप अपनी कोई भी बुक उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो. सेम हैपन्स हियर ऑल्सो. इफ़ आर icons are arranged properly, our desktop will look neat and tidy. हमारा desktop neat and tidy दिखेगा and you can easily find out any of your icons. So let me should tell you how you can arrange your icons. First you need to right click on the blank area of the desktop. See, this is the blank area. So here I am pressing my right mouse button. Now the moment I press the right mouse button, जैसे ही मैं right mouse button press करूँगी, a pop-up menu will appear. See, this is your pop-up menu. Now this menu has appeared on your screen. आप देखो ये आपके screen पे आ गया है. Now in this pop-up menu you have to click on this option, view option. And जैसे ही आप ये view option पे click करोगे, आप देखोगे यहाँ पे auto arrange icons ऑप्शन इज़ अवेलेबल. आप देखो यहाँ पे ऑटो अरेंज का आइकन, ये वाला ऑटो अरेंज आइकन ऑप्शन इज़ अवेलेबल. क्लिक ऑन दैट ऑटो अरेंज आइकन्स एंड यू कैन सी द चेंजेस ऑन योर डेस्कटॉप. आप अपने डेस्कटॉप पे चेंजेस देख पा रहे हो. ऑल द आइकन्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर. आप देखो आपके जितने भी आइकन्स यहाँ वहाँ फैले हुए थे डेस्कटॉप पे, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं. सो होप दिस इज़ क्लियर टू यू. लेट्स रिवाइज इट अगेन. आप कैसे अपने डेस्कटॉप पे आइकन्स को अरेंज करोगे. फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप, देन क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन एंड देन auto arrange your icons option and your icons will be arranged on your desktop. Now one more thing here I want to explain it to you. Like some of you have asked me how we can make our icons change its size. Means हम अपने icons की size कैसे change कर सकते हैं. Okay, so now let me tell you. Again you have to do the right click on your blank area of the desktop. Desktop के blank area पे आपको right click करना है. This pop-up menu has arrived. Now again click on the view option. Here you can see large icons, medium icons and small icons. Now when you click on large icons, the size of your icons will become large. See, you can see here. आप देखो यहाँ पर जो आपके icons हैं उनकी size क्या हो गई है, बड़ी हो गई है, large हो गई है. Now how you can make it small? Click on the view option, then small icons. Clear? But if I want to make it medium, I have to click on this medium icon option. So I hope this is clear to you how we can arrange the desktop icons and how we can change the size of our icons. So this much for today. Tomorrow we will again start a new topic. Thank you and please do revise it.